ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಹೇಳ್ತಾರೆ PC ನಾಗೇಶ್, ಇವನಷ್ಟು ಅಯೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಇಚ್ಛೆ. ನಾವು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಗಣಪತಿಯ ಪೂಜೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಿಜಾಬಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಖ್ಯನೋ ಹಿಜಾಬ್ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಆತಂಕ ಎಬ್ಬಿಸಿದಂಥವ್ರು, ಅವರನ್ನು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದಂಥವ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 16% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶಾಲೆಯಿಂದ TC ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया नेशनल कमेटी ने 23 अगस्त से 23 सितंबर तक जामे तालीम या इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए डिटॉक्स एजुकेशन डिपोर्ट हिंदुत्व मुहिम का शेड्यूल बनाया है। इस मुहिम में कैंपस टॉक्स, सेमिनार्स, कॉर्नर स्पीचेस, स्ट्रीट ड्रामा और कैंपस कारवां शामिल हैं। दरअसल तालीम किसी भी मुल्क की अक़दार और इस्तिदलाल को रोशन करने का एक अहम ज़रिया है। हिंदुस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी तालीम का तसव्वुर है जो साइंस, इंसान दोस्ती और तहक़ीक़ात और इस्लाह का जज्बा पैदा करे, लेकिन बीजेपी ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए मुल्क के तमाम जमहूरी निज़ाम को आलूदा कर दिया है। नौजवान जहनों को जहरालूद करके नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। यही वजह है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 को इसके गैर सेकुलर नौइयत पर तनक़ीद का निशाना बनाया जाता है। ये पॉलिसी तालीम को भी ज़ाफ़रानी बनाने की बुनियाद है। NCERT और CBSE की निसाबी किताबों में इंडियनाइजेशन की आड़ में 2014 से बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। IIM, IIT तक इस जहर से महफूज नहीं। कम्युनिटीज़ की तालीमी तरक्की को रोकने के लिए UPSC जिहाद, माक जिहाद और हिजाब पर पाबंदी जैसी मुख्तलिफ मुहिम्मात भी जारी हैं। हुकूमत ने अचानक स्कॉलरशिप की तकसीम भी बंद कर दी है और बजट में मुख्तस रकम को भी कम कर दिया है। हिंदुस्तानी आइन को उलटकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तालीमी निज़ाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तलबा को इस मुतासबाना रविश के ख़िलाफ़ आगे आना चाहिए। Decided to allow the celebration of Ganesh Chaturthi, Ganesh festival. But the High Court had said that any symbol of religion should not be practiced in the school and the educational premises. So what you have to say? See, BC Nagesh is a minister and he should not give such statement because it's against his oath he has taken. That's our first reading. A minister should not give such a statement in a religious statement there. Secondly, we need to understand that they want to get benefit from in the upcoming election, in the upcoming state election. That's why they want to polarize people based on the religious contents. So they want to create this issue, or they are trying to drop this issue among the students. Earlier also they had dropped another issue in the name of hijab ban. This was a political issue they have created here, and that issue they are supposed to create a polarization among students. After you see that after the hijab issue, people become more polarized, or students become more polarized after the BJP campaign. So such type of polarization should not be experimented in the campuses. That is the one aspect we can say. High Court verdict is favorable, or High Court verdict is fond of secular attitude of this country. But at the same time, a celebration cannot be equated with the personal attacks kind of things. If I am wearing a particular dress, that should not be treated as a religious celebration. That is a different thing. This is the hijab comes under the constitutional rights and all. That should not be treated as a celebration. Celebration is different context. It has a different context. That should not be compared to each other. That's why we are saying this is clearly a political benefit they want to reap out. So the people should understand this statement, and they want to resist. From the respective community should resist Nagesh's statement. And our campuses should be open to all, everybody, not be, irrespective of the religion. Will you fight to fight it out legally? No, we are taking. We are a student organization. We take different steps to fight such kind of political issues, and we are doing a protest, and we are making awareness to the public. If it is necessary to take legal steps, we will think of it and we will decide. Now, right now we haven't decided such kind of legal actions.
They want to create a tense situation, they want to create polarization among the students. That students should realize what is happening in our country. The BJP government wants to create such kind of polarizations based on religion. That's why they are making such statements, and they are creating hijab ban to polarize students based on the religion. Students are coming from different sections of the society, and they are coming to the institution to study what are the courses they are studying. But the BJP, they want to get a political benefit out of it. That's why they are creating such statement. This should understand, the students should understand this issue. That's why we are trying to oppose this, and we will we will share this political things under this statement, will communicate to the students.